Now next is a anti-hepatitis antiviral drug used in the hepatitis C. So there are two types of hepatitis B and hepatitis C. So hepatitis B virus HBV. Hepatitis B virus is a DNA virus while hepatitis C is a RNA virus. Okay, hepatitis B is a DNA virus, hepatitis C is a RNA virus. Virus will not integrate with the host genome, will not cause non-curable infection, but they cause hepatitis. So these two viruses, hepatitis B virus, hepatitis C virus, they will not cause a serious infection to you. मतलब ये वायरस आपके बॉडी में अगर रह भी गया तो आपको कुछ सिम्टम्स नहीं आएंगे, कुछ मतलब डिसीज नहीं होगा. Only one organ will be affected. They will go in the hepatic cells and they will damage it. So chronic hepatitis. So Mr. Amitabh Bachchan was suffering from hepatitis C. अमिताभ बच्चन जो है उनको हेपेटाइटिस सी हो चुका था और मरते मरते बचे थे. Now there are different reason or there are different way to transmit this hepatitis C. Hepatitis C का वायरस जिसमें है वो दूसरे में कैसे ट्रांसफर होता है. For example, if I am suffering from hepatitis C and if my blood is transfused into your body, so you may get the infection of hepatitis C. So that's why. वो एक बार अमिताभ बच्चन का एक एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे कुछ सिटी में. एक्सीडेंट मतलब वो बड़ा वो नहीं रहता है, वो वैसे ही छोटा सा होता है उनका. तो उसमें कुछ लगा होगा उनको, ब्लड ब्लड हो गई. तो ब्लड लगाया था उनको तो उस ब्लड में था हेपेटाइटिस सी वायरस. सो दैट्स व्हाई अमिताभ बच्चन आल्सो गॉट अ हेपेटाइटिस सी वायरस. So hepatitis C virus is transmitted through infected blood only. Okay. Hepatitis B, hepatitis B, hepatitis B cannot be eradicated from the body. So aim for treatment of hepatitis B should be suppression of virus and prevent the damage of hepatitis. हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, उसको आप पूरा किल नहीं कर सकते. यू कैन नॉट किल होल वायरस और यू कैन नॉट रिमूव द वायरस फ्रॉम बॉडी, बट you can suppress the virus. You can prevent the damage to the hepatic cell. So that should be the aim of therapy in case of hepatitis B. So lamivudine, that is nucleoside analog. Then lamivudine, then entecavir, entecavir is a guanosine nucleoside analog. Currently, most active against the hepatitis B, and it is used as the first line agent for hepatitis B. So lamivudine and entecavir. Lamivudine is a nucleoside analog, and entecavir is a guanine nucleoside analog. They are the first line agent for hepatitis B. Then along with that, adipavir, tenofovir, telbuvidine are the other drugs used in the hepatitis B. Then hepatitis C. In case of hepatitis C, ribavirin is a purine nucleoside analog, broad spectrum antiviral agent against the hepatitis C virus. Okay. So ribavirin is a broad spectrum antiviral drug against the hepatitis C virus, influenza and A and B. Ribavirin is used in case of hepatitis C. Then along with this interferon alpha, which is the antiviral antibody, so that is also be used in case of interferon will have no specific antiviral as well as other complex effect on the immunity and cell. Interferon will have complex antiviral activity plus they will modify your immunity system also. HCV virus, new direct acting anti-hepatitis C virus. There are new drugs which are directly acting on the HCV virus, hepatitis C virus. There are new target for the drug. They target specific non-structural protein. They target specific non-structural viral protein. These are the protein they are produced by virus during the replication, transcription, translation, तो which are not structural protein. वो उसका स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं हो उसका. It has a role in replication of hepatitis C virus in the hepatocytes. So जैसे hepatitis C virus का इन्फेक्शन होता है वो आपके सेल में जाएगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा. वो ट्रांसलेशन के समय में क्या करेगा, वो प्रोटीन बनाएगा. बट द प्रोटीन मेड बाय virus, there are two type: functional protein, non. Some protein are the structural protein, some protein are the functional protein. Target specific non-structural protein. Okay, so these drug will target a non-structural protein which are important, which has important role in the replication of virus. So they are used in the combination with ribavirin. Okay, these drug, which drug? Specific drug, we'll see it. They are used against the. They are used in the combination with ribavirin and interferon alpha. Now we'll see which kind of drug are these. Example of these drug. So these drugs they are classified. First one is a NS5B polymerase inhibitor. NS5B is a
इट इज अ नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन. जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन था वो प्रोटीन का नाम है NSB5. सो NSB5 polymerase inhibitor like sofosbuvir, sofosbuvir, then NS3 protease inhibitor, then example is cimeprevir, then NS5A inhibitor, decaltavir, lepidavir, and decaltavir, lepipsavir, then valpatasavir. So these are the drugs which are non-structural protein specific drugs against the hepatitis C virus. Okay, इसमें examples वगैरह याद रखो कभी भी. Examples of drug which are acting on a specific steps of your viral replication. Uncoating will be prevented by your amantadine and ranitidine. Then transcription will be prevented by interferon. Translation of viral protein will be prevented by again interferon and this virus. And DNA and RNA replication will be prevented by these drugs like acyclovir, cidofovir, famiclovir, ganciclovir, foscarnet, then idoxuridine, then ribavirin, soriudine. Then assembling of viral particle will be prevented by interferon and rifampin. Budding and release prevented by zanamivir and oseltamivir. Now, next is a later part of your antiviral drug treatment of HIV and AIDS, drug therapy of your AIDS. Now, HIV is nothing but you know that it is a human immunodeficiency virus. It is caused by human immunodeficiency virus. It is a type of RNA virus. So see here. So HIV, it is nothing but the immunodeficiency virus HIV. It causes a disease known as AIDS, acquired immunodeficiency disorder. AIDS, human immunodeficiency virus. It causes AIDS. The virus is commonly transmitted through a sexual intercourse or by contaminated syringe or needles. अगर आपका contaminated है, वायरस से contaminated needle syringe है, या फिर जो भी पार्टनर है सेक्सुअल पार्टनर उसको अगर एड्स है तो यू कैन गेट एड्स. ओके, देन अगेन इट इज वायरस इज आल्सो ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन. जिसके अगर आपने किसी का ब्लड लिया है उसको एड्स होगा तो वो आपको भी वायरस का infection हो जाए. So blood transfusion through a blood products also transmitted from infected mother to its fetus. If a pregnant woman is there and she has a HIV infection, then the HIV virus can be transmitted to a fetus. So it can cross the placental barrier, and again it can be transmitted through during childbirth or during breastfeeding. जो बच्चे दूध पीते हैं माँ का उस टाइम पे भी वो ट्रांसमिट हो सकता है. बट डू नॉट ट्रांसमिटेड बाय कैजुअल हैंडशेक विद द पेशेंट. एरियल ट्रांसमिशन इज नॉट देयर. मींस अगर आप किसी किसी एड्स पेशेंट के सामने एड्स पेशेंट के बात कर रहे हो तो उसमें नहीं आएगा. जैसे कोरोना वायरस होता है ना, एरियल ट्रांसमिशन. देन अगेन अगर आपने किसी एड्स पेशेंट के साथ में हैंडशेक किया तो यू विल नॉट गेट. सो इट इज ट्रांसमिटेड ओनली बाय infected blood or infected person. If you involve in the sexual activities with infected person, then blood infected blood transfusion or blood product transfusion, then infected mother will transmit to her fetus during childbirth also and during breastfeeding also. Okay, now what are the sequence of events after infection? कि जैसे ही आपके बॉडी में वायरस HIV वायरस आ जाता है तो क्या क्या होता है. अपॉन एंट्री इन द बॉडी virus upon entry of HIV virus, viral outer okay. So upon entry in the body HIV virus के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है. वायरल आउटर ग्लाइकोप्रोटीन इज देयर नोन एज GP120. It will bind to a CD4 receptor. CD4 receptor on the surface of T lymphocytes, monocytes, macrophages, dendritic cells होते हैं. मतलब आपके बॉडी में जो डिफेंस सिस्टम है आपका, जैसे T cells, lymphocytes, monocytes, macrophages, dendritic cells होते हैं. तो इसमें CD4 रिसेप्टर जो जिसके ऊपर होगा तो उसको बाइंड करेगा ये वायरस using viral glycoprotein known as GP120. It will bind to CD4 cells, then CD4 receptors of T cells, monocytes, macrophages, dendritic cells of brain. So this is followed by binding with the chemokine receptor on the cell surface. कि सेल सरफेस पर जैसे होता है ना CD4 रिसेप्टर पे होते हैं, chemokine टाइप के रिसेप्टर पे होते हैं. जैसे chemokine cell receptor like CCR5 and CXCR4. So
Once it will get entry in your body, it will get attached to a cell by using CD4 receptors and CCR5 and CXCR5, CXCR4 receptors. Okay. Now attachment to above receptors, attachment to above receptors, attachment of virus to above receptor will fuse the virus with your cell. Will fuse with the cell through viral glycoprotein GP41 and enters in the cell and genetic material of virus along with the reverse transcriptase, that is RNA dependent DNA polymerase and other enzymes also be activated. कि क्या होगा कि जो वायरस आपको सेल को अटैच होगा ये रिसेप्टर के थ्रू CD4 या CCR4 CXCR4 इसके थ्रू अटैचमेंट होने के बाद ये जो वायरस है आपके सेल में जाएगा. ओके, सो इट विल फ्यूज टू योर सेल वाया वायरल ग्लाइकोप्रोटीन GP41. GP41 एक प्रोटीन रहता है वायरस में ग्लाइकोप्रोटीन, so that will fuse the viral cell to the your host cell. Okay, then it will get entry into the cell and it will release the genetic material and all its enzyme. जैसे ही उसने एंट्री ले लिया सेल में, उसका डीएनए या एड्स का वायरस तो आरएनए वायरस होता है, सो आरएनए रिलीज होगा और उसके लिए जो एंजाइम लगता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को बोलते हैं, दैट आल्सो बी रिलीज्ड एंड अदर एंजाइम्स विल बी एक्टिवेटेड. सो जो भी सेल का एंजाइम सिस्टम उसको एक्टिवेट कर देगा. नाउ फ्रॉम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है आपका वायरस का, so whatever genetic material of virus is there, that is single stranded RNA, so that will be converted into DNA, that will be converted into DNA complementary DNA by reverse transcriptase. So reverse transcriptase of virus will convert viral DNA into, oh sorry, viral RNA into your DNA, okay, complementary DNA. So there are mutations at this stage, there are possibility of mutations at this stage and which is responsible for the drug resistance. That's why AIDS virus is a multi-drug resistance. AIDS virus को drug का resistance जल्दी हो जाता है, so it can tolerate another drug also. Newly synthesized viral double stranded DNA, ठीक है, जैसे उसका RNA से DNA बनेगा डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड RNA से डबल स्टैंडर्ड DNA बनता है. So जैसे बनेगा, now the DNA will get integrated with the host cell chromosome by HIV integrase. HIV वायरस में एक एंजाइम रहता है इंटीग्रेज, that will integrate the viral DNA with the host DNA. मतलब आपका जो सेल का DNA है और उसका जो DNA है जो बना है उसको इंटीग्रेट करेगा, मिक्स कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा. इट विल परमानेंटली अफेक्ट द सेल, जो सेल है वो परमानेंटली अफेक्ट हो जाएगा. एंटीजन और साइटोकाइनिन स्टेप नंबर 4, ये होगा स्टेप नंबर 3. पहले स्टेप में क्या होगा, एंट्री होगा, दूसरे स्टेप में अटैचमेंट और वो अंदर जाएगा सेल के, तीसरे स्टेप में क्या होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल सिंथेसिस होगा, चौथे स्टेप में antigen and cytokine will activate the cell and HIV replication start using the host DNA polymerase. This transform DNA into mRNA and mRNA into proteins. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि cytokinin and antigen recognized by the cell will activate the cell. सेल जो है होस्ट सेल उसको एक्टिवेट कर देगा एंड HIV का जो DNA रिलीज हो चुका है उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा यूजिंग होस्ट DNA पॉलीमरेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का रोल क्या है, सिर्फ आरएनए से डीएनए बनाना. आरएनए वायरस है आपका कौन सा, HIV वायरस, वो जैसे अंदर जाएगा रिलीज करेगा आरएनए, तो वो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होगा बाय यूजिंग viral reverse transcriptase. Now the DNA, viral DNA will be multiplied or replicated by using host DNA polymerase. मतलब जो सेल का DNA polymerase है उसके यूजिंग उसका यूज करके वो रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा. The viral DNA will be replicated and transcripted into mRNA and then the mRNA is translated into protein. This is how the sequence of events. Now next is, now these proteins after translation the protein formation will be there and these proteins after they are assembled in the cytosol of host. जैसे ही उसका ट्रांसलेशन करेगा वो ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन जो बना है उसका assembling होगा. So these proteins after the translation assembled in the cytosol of host and viral nucleocapsid are formed and viral buds, inactive viral particles are formed. After the formation of inactive viral particles, they are maturated. They get mature. Okay. After the process of budding and budding, virus get maturation. Viral protease enzyme is having important role in the maturation. Protease will break down the large polypeptide into smaller. The matured daughter virus will release
mature daughter virus will release and can affect the another cell. Okay. Now during the replication process, आपका जो immunity cell है CD4 cell, so the immunity arm of CD4 cell gets damaged and the patient become immunodeficient. Patient becomes immunodeficient. तो ये आपका HIV वायरस क्या करेगा कि जब CD4 सेल के अंदर जाके इंटीग्रेट हो जाएगा तो CD4 सेल्स का जो फंक्शन है इम्यूनिटी का वो इम्पेयर होता है और दे आर नॉट useful now. They are not effective in immunity. That's why the patient's immunity goes down. जिसको भी एड्स का वायरस का इन्फेक्शन हो गया वो वायरस की वजह से नहीं मरता, जिसको भी HIV वायरस का इन्फेक्शन हो गया वो वायरस की इन्फेक्शन की वजह से नहीं मरता, वो मरता है सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से. So because of HIV infection, the immunity of that patient will go down and there are the opportunistic infections. मतलब जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हार्पेस वायरस का इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपका निमोसाइटोसिस हो गया, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस. So all other bacteria, because your immunity is gone down because of this HIV virus and you are vulnerable, you are prone to get a secondary infections. Okay, so this secondary infection like candidiasis, tuberculosis, herpes simplex, so patient usually dies because of this infection, not by HIV virus. So जिसको भी एड्स है उसमें HIV वायरस की वजह से उसकी मौत नहीं होती, उसकी मौत होती है आपकी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मैक्सिमम. Tuberculosis is the most common secondary infection in case of HIV patient. Now remember initially, now what happens, इसका मतलब इनिशियली इसके अगेंस्ट में वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है आपकी बॉडी में. So initially in your body antibodies develops against the HIV virus in the 2 to 8 weeks, and that antibody also kills the HIV virus. But in some cells, in few cells, this virus remains dormant for years, up to 1 to 7 years, and its incubation period is around 1 to 7 years, average 4.5 years. So it will remain dormant, it will remain inactive in the cell only. आप में कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, आपकी इम्यूनिटी भी ओके रहेगी, लेकिन आपके सेल में वो डॉर्मेंट पोजीशन में रहेगा वायरस. एंड वंस द फेवरेबल कंडीशन कम्स, so it will again multiply drastically, and it will multiply. Patient may remain asymptomatic carrier. जब वो डॉर्मेंट पोजीशन में होगा, डॉर्मेंट कंडीशन में रहेगा, patient may remain asymptomatic carrier for a few short febrile. Few patient may develop some sort of illness, but asymptomatic HIV carrier can infect other persons. Okay, in the later stage, after this, in the later stage, there is a when there is a favorable condition, virus will virus will start the replication in the lymph nodes. A high rate of replication in the lymph nodes and lymphoadenopathy with or without oral candidiasis, herpes zoster infection. In the later stage, patients suffer from the opportunistic infection like TB, candidiasis, meningitis, sinus toxoplasmosis, repeated GIT infection like Kaposi sarcoma, then Burkitt's lymphoma and non-Hodgkin's lymphoma. इनिशियली क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के बाद में आपकी बॉडी ने अगर रेस्ट किया उसका, तो वो डॉर्मेंट पोजीशन में जाता है आपकी सेल में और वहाँ पे मतलब बैठता है घर का, तो सिम्टम्स वगैरह कुछ नहीं आता. लेकिन बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो इतना फास्टली मल्टीप्लाई होता है, आपके लिम्फ नोड में सब HIV वायरस से जाएंगे, तो उसमें लिम्फो एडेनोपैथी होता है आपको. देन along with this secondary infection like candidiasis, meningitis, TB, toxoplasmosis will be there. And so there is no drug currently used which can इरेडिएट HIV वायरस. ऐसा कोई ड्रग ही नहीं है कि HIV वायरस को पूरा रिमूव कर सके बॉडी में से. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग कैन बी यूज्ड टू सप्रेस द वायरल लोड, टू डिक्रीज द वायरल लोड एंड टू इंक्रीज द सर्वाइवल रेट ऑफ पेशेंट. सो अभी जो ड्रग्स है, ड्रग्स अगेंस्ट द HIV, they are not able to irradiate the HIV completely, but drug combination can prevent the viral replication load. It can be decreased, immunological status of patient can be improved, and the onset of disease can be delayed and survival will be prolonged. थोड़ा सा उसका लाइफ स्पेन बढ़ जाएगा, उसको तो मरना तो है. Now anti retroviral drugs, drug used in the treatment of HIV. What is AIDS? It's an acquired immunodeficiency syndrome. There are two types of HIV, HIV1 and HIV2. There are two types of HIV, HIV1 and HIV2. So what are the different classes of drugs that are used in the treatment of HIV? First one is a reverse transcriptase inhibitors. Second class will be the protease inhibitors, and they are highly active
And another highly active, two classes of drugs are mostly used in the treatment of HIV. Reverse transcriptase inhibitor. In that also you have two types: nucleoside reverse transcriptase inhibitor and non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor. And then protease inhibitors are also there. So these two are the widely used drug against the HIV infection. Then highly active antiretroviral therapy. Highly active antiretroviral therapy (HAART). Arrangement. It is a regimen. It is a regimen containing two nucleotide reverse transcriptase inhibitor drug combined with either non-nucleotide reverse transcriptase inhibitors or protease inhibitor. मतलब ये क्या है? Highly active antiretroviral therapy. It is a it is a regimen, dosage regimen of combination of drugs like combination of two NRTs. दो ड्रग रहेंगे जो जो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर रहेंगे और उसके साथ में तीसरा रहेगा इधर नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और प्रोटीज इनहिबिटर. तो उसको बोलते हैं HART थेरेपी. HAART. HART regimen suppresses the HIV virus replication in the plasma, and plasma HIV RNA levels are lowered, decreases, and patient survival increases. Resistance to these drugs can occur because HIV is a highly mutation rate. HIV virus का mutation rate बहुत ही high होता है, and that's why the virus can develop resistance to the drugs. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Nucleoside reverse transcriptase inhibitors. इसको बोलते हैं NRTIs, nucleotide reverse transcriptase inhibitor. First drug used in the treatment of HIV was zidovudine. Zidovudine नाम का पहला ड्रग था. इसका मैकेनिज्म क्या है? As it is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor. So nucleotide reverse transcriptase inhibitors, these drug gets converted into corresponding triphosphate derivative, which has a high affinity for HIV reverse transcriptase, and this enzyme is specific to the HIV and required for the synthesis of DNA. So you can see here. So no nucleotide reverse transcriptase inhibitor gets converted into their derivative corresponding triphosphate derivative. जैसे acyclovir होता है आपका, acyclovir का triphosphate derivative बनता है. Likewise that. So nucleotide reverse transcriptase inhibitor get converted into their triphosphate corresponding derivative, and this triphosphate derivative will have a high affinity towards the HIV reverse transcriptase, the enzyme responsible for the synthesis of DNA from RNA in the HIV virus. So reverse transcriptase inhibitors like nucleoside reverse transcriptase inhibitors like nucleoside analog. They are the nucleoside analog. They competitively binds with the reverse transcriptase and terminate the DNA elongation. This is the mechanism of action. Zidovudine. Zidovudine is also known as AZT. AZT or azidothymidyl. It is a thymidine analog active against the HIV and other viruses. Other nucleotide reverse transcriptase inhibitor drugs like didanosine, zalcetabine, stavudine, lamivudine, rocavir, they are used as alternative in patients with the immunocompromised unresponsive to the zidovudine. तो zidovudine क्या है? न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है. तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है उसका? बोन मैरो सप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट विद zidovudine, बोन मैरो सप्रेशन. उसके बाद नौशिया, माइल्जिया, फटीग वगैरह, न्यूरोटॉक्सिसिटी. Nausea, myalgia, insomnia, anemia. So anemia can be treated with the erythropoietin. Then neutropenia is decrease in the RBCs. Okay. So high dose can cause myopathy and neurotoxicity. What are the uses? Drug of choice in case of AIDS. Remember, zidovudine is a drug of choice in the treatment of AIDS. It can prolong the survival rate of the patient. मतलब patient को तो मरना ही है, लेकिन बस कितने दिन जिंदा है उसका दिन इंक्रीज करेगा. कौन? zidovudine. So survival rate will be increased. Disease progression and it prevent the secondary infection. So zidovudine और क्या करेगा? जो डिसीज का प्रोग्रेस हो रहा है, डिसीज प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसको प्रोग्रेस को थोड़ा सा कम करेगा, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं जैसे टीबी, herpes, meningitis, etc., so that will be prevented, and it can be used in the pregnancy also. That is zidovudine. Our next is a non nucleoside reverse transcriptase inhibitor. अभी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके जो मैंने बोला है. हर एक एग्जांपल में बोलते नहीं बैठूंगा, उनका एडवर्स इफेक्ट वगैरह. एडवर्स इफेक्ट का एक टेबल बनाया है लास्ट में. देन नेक्स्ट वन इज अ नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स. So they are known as a NRTIs, non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor. Drug like nevirapine,
delaviridine, efavirenz, they are a synthetic derivative of synthetic antiviral drug. So mechanism of action. So non-nucleotide, see, non-nucleotide reverse transcriptase inhibitors. Nucleotide reverse transcriptase inhibitor NRTI में क्या होता था? They were converted into a triphosphate derivative and then they inhibit the reverse transcriptase. But here is not condition. Non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor, they they bind directly to the reverse transcriptase. They are not converted into triphosphate derivative. They will directly bind to reverse transcriptase and bring out some changes in the enzyme and hence inactivate the enzyme. They will bring some changes in the reverse transcriptase enzyme. So the functionality of enzyme will be lost and therefore the enzyme will not able to do its work. So inactivation of enzyme. So non-nucleotide reverse transcriptase inhibitors are only effective against the HIV-1, not against the HIV-2 and other retrovirus. So non-nucleotide reverse transcriptase, they are only effective in the type 1 HIV. पढ़ लेना